Hello. How are you guys doing today? Welcome back to the channel. Today we're going to watch a stand-up comedy routine by Akaash Mehta. This is called the Ranbir scam. I was browsing through all stand-up comedy routines and मुझे नाम नजर आया Ranbir scam. I was like, this sounds interesting. Because Ranbir is one of my most favorite actors from India. So let's go and check it out. It's all good. Hi, my name is Akaash. This is what I do, okay? It's my full-time job. 7 years, full. घर पे गाना इसी से आता है क्या अंतिम का ऑपरेशन कॉमेडी अभी तक अंधी नहीं है you never know right दिवाली में मॉम goes out Oh shit यार हमारे पाकिस्तान में दिवाली का ऑपोजिट है शब बारात और शब बारात को हम पटाखे फोड़ते हैं जस्ट लाइक यू गाइस डू इन दिवाली और हमारा एक दोस्त था जिसकी आंख में एक दफ़ा पटाखा चला गया था और वो एक आंख से अंधा हो गया था मैं पता नहीं हंस क्यों रहा हूँ ये बताते हुए लेकिन क्योंकि वो दोस्त भी ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट इट टू ही आल्सो यूज्ड टू लाफ लेकिन हुआ ये था कि उसकी दादी ने उसको बोला कि जा अब दही लेके आ और वो शब बारात की रात थी वो निकला पैदल दही लेने के लिए क्योंकि बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और पटाखा जो है उसकी आंख में लग गया उसकी एक आंख अब काम नहीं करती है सो या दैट हैपेंस दिवाली शब बारात लोडू टेढ़ा रॉकेट लगाया तो फिर आई एम प्रिपेयर्ड I just want you to know that. Don't ask me what I do after the show. People are like, what do you do in the real world? The answer is obvious. No job. And that's not, it's not for money. 8 seconds. You're all really judging me, man. It's not for money. Just when you're living your passion, you find new passions. Yeah. I'm kidding, so obviously. But, see, it makes sense. Trust me, okay, here's what happens. Every time a waiter comes to me and says, sir, would you like to pay in cash or card? I look him in the eyes and I say, kind. I जाता हूँ. In fact, in any situation in life, if you're a guy, no sir, I mean, ladies are not tired as a woman, but as a guy, if you are in a fight and somebody wants to beat the shit out of you, just look up and be like, चूसेगा. Done, you won. You have won. Yeah, think about it. वाकई में nothing homophobic about it. It's just अगर कोई बंदा मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ and he says something like that, it will like put you like आप बोलोगे क्या? What? Like आप ready होकर आप बोलोगे what? So it might work. Because homophobia trumps ego, right? Wow. So lie, ऐसा करके पकड़. Just go for it. Is anyone with the kids today? Anyone with the parents? I love it when people do that. बहुत awkward माहौल होता है. Then you have genuine family moments. Like real moments within the family. Where the kids and parents look at each other now and then. You know what I mean? Amazing. And it goes both ways. Like sometimes the parents are looking, oh fuck, तू बड़ा हो गया. Sometimes the kids are, oh fuck, आप कॉलेज में थे. Yeah, आपको भी समझ में आती है कॉमेडी. Personally, I'm not a big fan of younger people. Like between the age of 5 and 23, they're यार कितनी गोल्डन बात कर दी वैसे. opinion नहीं, उसके बाद opinion. बच्चा, just look at them. Look at their face. They don't know. These people know. What do they know? I don't know, but you don't know. That's the point. That's right. They don't know. आँख में उन्होंने बोला टनल ऐसे बज रहा है. अच्छा. It's fascinating, man. How confident these kids. And the thing with them is they think the only thing wrong with the world now is their job. नमस्ते, okay. समाज का गलती है. It's not your fault. You know what I mean? You learn from the shit you watch. Shit. They also watch, but they don't buy into that shit. Like I have friends who are those annoying. They put up the status on Facebook. If you judge a fish by its ability to climb a tree, I've heard that video. I've watched the video. I've watched the memes. it is stupid. Yeah. Stands up. Albert Einstein. I'm reason I want to do this. 15 साल से जानता है, dude. Like तेरे को तो लगा तू मच्छी भी है. तू एड्रेस पता है, dude. Like तेरा पोटेंशियल कलकत्ता में था. I mean, that's not your fault. That's what I'm trying to say. Because
तुम लोग क्या पढ़ा, इम्तियाज ने कुछ चूतिया बनाया तुम लोग। इम्तियाज कौन है? ये इम्तियाज अली। सब कुछ तू जॉब छोड़ के तो देख, क्या लगा है जॉब छोड़ के तो देख। अरे फैक्स मचा क्या तू फैक्स। Dumb shit inspires kids. That's what you guys watch Ye Jawani Hai Diyawani? Oh wow, some fans in the house. I love that. It's a great film. It's about, and if you don't know the movie, then now we get to the job, which is like a something. Whatever kids are into these days, some video-related work he's doing. Video-related work. Already living the dream job, but he quits the dream job for the dream girl. Deepika, you guys know Deepika is in the movie. Deepika Padukone. It's an amazing story. Deepika's narrative is so great. She's ugly and then she's hot. And it's amazing. Have you noticed? Aggo! Wow! What is going on? Aggo! Wow! Aggo! Everybody relates to Ranbir. And okay, I get it. Yeah, he's relatable as fuck. Yeah, bilkul. But it's also not, right? I mean, there are other people in that movie. You know? If you remember, Ranbir has a friend in that movie. Aditya. Right? Nobody's gonna relate to Aditya, man. Aditya Roy Kapoor, because you know who is the number 2 name, right? बहुत आला यार, इसके ये वाले jokes बहुत अच्छे हैं. Aditya also has a dream in that movie. His dream is to start a bar. You remember in the beginning of the movie, we are in the later part of the dream because the bar is failing. Aditya's solution to the problem is drinking. नहीं बेचने का है तेरे को, पीने का नहीं है तेरे को, क्या कर रहा है तू? Right, middle of the movie, obviously Ranbir is in turmoil because चश्मा उतर गया ना. अब she's hot. उसका लाइफ उल्टा हो रहा है, full fuck मेरे को दिखाओ देखने का मन कर रहा है. And Aditya's solution, next stage of solution, gambling. I'm like fuck, ये लड़का क्या देख के बड़ा हुआ है? इसकी हंसी बहुत आला है. End of it, Ranbir's life has succeeded. Okay, Aditya का बार बंद है. You understand? That's what nobody fucking understands about Ye Jawani Hai Diyawani. Ranbir का life succeed होता है. आदित्य बेचारा आशिकी 2 तक बढ़ रहा था. You grasp what's happening? You understand what I'm trying to say? Man rock bencho bang. मजे की बात है. चड्डे में मत फिर bencho सीटों तक पेड़ लगाएगा. फिर क्या फायदा? Okay, so this wasn't like entirely about Ranbir, but it was about this one notion in the stand-up comedy routine कि it's a scam. हम फजूल में उससे relate कर रहे होते हैं, you know, there's other people doing other dumb shit that you can also relate to, but nobody wants to. Okay, I understand. So it wasn't really about Ranbir. It was just, you know, one joke about Ranbir. I really like his joke जिसमें इसने parents की बात की थी, family की बात की थी. It just really clicked with me. When parents go together with their kids to watch a stand-up comedy routine, उस दिन बहुत चीज़ें डिस्कवर करते हो आप. उस दिन बहुत जेन्युइन फैमिली मोमेंट्स आते हैं. बिल्कुल सही बात है. मुझे इसलिए पता है कि देयर वाज अ स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन. आई थिंक इट वाज फर्स्ट इन कराची. आई डोंट नो, मे बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एट लीस्ट. साद हारून वाज द वन हु वाज डूइंग इट विद दानिश अली. उस वक्त साद हारून और दानिश अली साथ करते थे. दानिश अली वाज द opening act and Saad Haroon was the main act of that show. So my dad got some tickets and he gave me those tickets and he said तुम पहले अपने दोस्तों के साथ जाओ, अकेले जाओ, पहले देख के आओ कैसा है, और हम फैमिली मेंबर्स यानी कि मैं और तुम्हारी अम्मा हम अलग से जाएंगे, हम अलग से देख के आएंगे. Then they went separately and I went separately and फिर हम दोनों ने जब वो रूटीन देख लिया, हमें अच्छा लगा. उसके बाद फिर हम एज अ फैमिली भी गए दोबारा. Watched the same routine. थोड़े बहुत ऊपर नीचे जोक्स थे, but it was pretty much the same thing, but it's so much fun. We watched it 2 times. मैंने और मेरी फैमिली ने अलग अलग 2 दफा देखा वो पूरा कॉमेडी सेट. It was a great comedy set. You could watch it again even any day. It wasn't just like 5 jokes. It was a whole 1.5 घंटे लंबा comedy setup था. उसमें 2 comedians आके, you know, they were doing a lot of things. So it was really funny. And I remember, you know, having those moments with my family कि अरे like, and especially in my family we're not conservative, but we are when it comes to like तहजीब और तमीज़. लैंग्वेज का बड़ा एक वो है. मेरे घर पे आप मेरे को नहीं बोल सकते. मेरे घर पे तो बोल सकते हो, लेकिन मेरे को चाहिए और तेरे को दूंगा ये नहीं कर सकते आप मेरे घर पे. मुझे तुझे ये भी मना है. मैं और आप ज़्यादातर होती है, लेकिन मुझे तुझे फिर भी, you know, बर्दाश्त से पहले अगर मैं अपने you know, if children are talking amongst each other, लेकिन बड़ों से बात करते हुए you cannot be तेरे को मेरे को, this cannot happen. So at least, you know, वो भी थोड़ा सा एक हमारे लिए बड़ा शौक था कि कोई स्टेज पे खड़ा होकर गंदा जोक मार रहा है या कोई डर्टी बात कर रहा है. There was a really awkward yet, you know, normal situation between the family. Okay, you're grown up, we have been through this, so you know, both understand. Yeah, that was a good observation, really good observational joke. I like his comedy. His comedy is like a little
makes you feel a little existential sort of a माहौल आ जाता है आपके दिमाग में कि you know what matters really. And he goes के क्या चाहिए blue job like, and I understand his joke so much क्योंकि it's come out of you know why people kept asking him the same question. तो ऐसा होता है ये दिस हैपेंस विद एवरीबडी. मेरे साथ होता है. मेरे इंस्टाग्राम पे 100 अगर मैसेजेस आते हैं 100 में से 30 जो होते हैं वो सेम बात होती है और आई कैन रिप्लाई टू एवरीबडी द सेम थिंग या मैं कॉपी. सो इट्स जस्ट तो आप सोच लेते हो एक जवाब, यू कम अप विद एन आंसर कि मैं ये जवाब दिया करूंगा हमेशा. तो इसने ये जवाब ढूंढ लिया कि जब इसको आई एम श्योर 15,000 लोगों ने, इसके अपने दोस्तों ने भी जिनको पता नहीं होगा ये कॉमेडियन है, आकाश के अपने जो दोस्त हैं उन्होंने पूछा होगा तू व्हाट डू यू डू. अच्छा तू कॉमेडी करता है, दैट्स ग्रेट, बट व्हाट डू यू डू इन रियल वर्ल्ड, लाइक जैसे एज इफ हिज जॉब इज नॉट अ रियल जॉब. सो ही गोज योर जॉब ऑफ कोर्स. फिर इसके बाद ही डबल्स डाउन ऑन इट. ही डबल्स डाउन बाय सेइंग पैसों के लिए नहीं करता मैं भाई, लोगों को पैशन ढूंढना है, पैशन है मेरा. बहुत आला यार, सच अ ब्रिलियंट जोक यार, बहुत अच्छा जोक था. या होमोफोबिया डज ट्रम्प ईगो. आपकी ईगो को पीछे छोड़ देगा होमोफोबिया. इतना स्ट्रॉन्ग हेट का इमोशन है वो. आई ऑल्सो लाइक हाउ ही सेड कि आई डोंट लाइक द यंगर जनरेशन. बहुत गट्स चाहिए आपको ये बोलने के लिए क्योंकि यू नो इट्स समथिंग दैट ओल्डर पीपल हैव बीन फीलिंग फॉरएवर बट दे डोंट से इट आउट लाउड. लेकिन अब बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि इफ यू आर यंग डोंट नो मच बट यू थिंक लाइक यू नो मच बिकॉज यू हैव सो मच इन्फॉर्मेशन नाउ. सो ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है बट यू नो इट्स ऑल खोखला. खोखला पता है क्या होता है? एम्प्टी इनसाइड. इट्स अ बिग शेल, यू हैव अ रियली बिग ब्रेन बट इट्स ऑल एम्प्टी इनसाइड बिकॉज इट्स नॉट फुलफिल्ड विद एक्सपीरियंस. इट्स नॉट फिल्ड विद एक्सपीरियंस और विद यू नो credible knowledge, not just information. So that's what you know. It takes time. वो time के साथ ही आता है. I can claim to be a really smart person. I can claim to be smarter than a 22-year-old. लेकिन आज से 10 साल बाद I will be much more smarter than I am today. So that's just how it is. That's just how life is. This is also the reason कि हम जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो हमें बहुत cringe होता है कि यार ये मैं कितना बेवकूफ था. Look at my clothes or look at my hairstyle. Look at my you know whatever I'm doing. So that's we always grow with time. Main thing is time. Information, intelligence, knowledge, ये सब चीजें जरूरी हैं. But with time, you become wise. Yeah, that was Ranbir's scam by Akaash Mehta. Yeah, I've seen a lot of routines from Akaash Gupta, but never from Akaash Mehta. So yeah, that was really funny. I will check out more of his stuff. He looks like a proper seasoned comedian. जो कि you know this is his main art, this is his trade, and he seems really comfortable on stage. He looks like he's a professional. So fan from now on, and I will check out more of his stuff definitely. Let me know which video you guys want me to react to next. Leave it in the comments below. Tweet me at Pakistani Reacts. Follow me on Instagram at Farrukh not Farouk. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Poll का जवाब देना मत भूलिएगा.